Assalamu alaikum. Today we are starting off with lecture number 16, and before we proceed, let me just give you a feedback or recap that what we did in lecture number 15. We started off with the case study of K.T. Bandar, and the reason why I told you about K.T. Bandar was that before that in lecture number 14 we were talking about community-based natural resource management. Given that when we are dealing with this subject of natural resource planning and management, this community-based natural resource management is gaining a lot of importance, and the reason for this importance is that the authoritarian kind of management models in which it was a top-down, they are no more existing, and even if they are existing, they have evolved so much that they have become quite decentralized, deconcentrated, delocalized, and that's why such models are gaining importance. So therefore I thought that let us spend like 2 to 3 lectures on community-based natural resource management, because a lot of opportunities come upon, like if you are browsing on the jobs of UN or UNHCR or other international organizations, they are actually looking into the models like community-based natural resource management, working with communities, capacity building. So we need to understand what is exactly in this kind of model. So we discussed the case study of K.T. Bandar, which is a coastal ecosystem and Indus Delta, and we talked about that what kind of coping mechanisms they are using, are they sustainable, they are not, and what are the government failures, and apart from the government failures we looked upon that how community is building upon their resilience and reducing their vulnerability towards cyclones and other kinds of natural disasters. So that was something about the practical implication of what we have studied in theory. So today lecture, that is lecture number 16, that is again a connection with lecture number 14, where we ended up from where we started, rather, from the national level, from the provincial level, and moving on to the local level. And what we were actually talking about was that how this goal of community-based natural resource management is achieved. And they said that, okay, it's not a single goal. You are not just conserving the resources, but it's a tri-objective. And what was the tri-objective? That was basically that number 1, it was poverty alleviation, number 2, it was natural resource management, and number 3, it was good governance. And we also discussed about it that we can't achieve the 3 objectives simultaneously. It will be difficult maybe at the start or maybe in the middle, but it's not impossible. And throughout this these 13, 14 and now 16 lecture, we are going to understand that how we can achieve this thing. So far what we have covered is that we have covered a local level, and today we are going to see that how to support community-based natural resource management at the local level. Well, dear students, one of the things that I would like to share with you is that you would see that my slides are becoming a little bit more comprehensive, because this material is nowadays available, and this is the latest material. So therefore I try to put more sentences into it. Therefore once you go through the slides, you have a better idea and you can go through them quite easily, and you don't have to search much of the material. That's why I have placed much of it on the slides. I hope it's beneficial for you, and it helps you in terms of your professional growth. Over here what we are going to talk about, that how this at the local level, this community-based natural resource management is being supported. And what they say, that if at the local level this is a success or it is a failure, it goes straight up to the national level. We can't say that if the local level outcome is determined at the success or the failure of this particular initiative is determined from the national level. So it's a connected approach, it's not in isolation. Then
we need to, in order to have this community, in order to involve community in this management of resources, there needs to be some economic incentives. And economic incentives, why? Because community needs to see something that, okay, this is beneficial for them if they are conserving the environment. I'll again refer back to the example of Keti Banda. Women and children and people were involved in terms of conserving the mangrove forests, and one of the advantages is that if mangrove forests are there, so it will increase the fish stock. It gives them an economic incentive because the fishermen are dependent upon the fish stock. The second one is that it protects them from floods and cyclones. So therefore, we need to portray, or we need to highlight the importance of a natural resource in such a manner that the community feels that it gives them an incentive. So it's a win-win situation if they protect the environment. Now, we have another thing, that it should coordinate resource use among numerous individuals to establish optimal rate of production consumption at local level as well as for society at large. So therefore, apart from conservation, coordination is another function where they are actually defining the usage of the resource, that how the resource has to be used and how it has to be managed, because they have to keep the balance between demand and supply. Now, the rationale for community-based management as our development strategy. And yes, development, which we have already discussed in the previous lectures, it is a kind of multi-dimensional concept. And in development, we are talking about that if natural resources are utilized properly, it is a kind of development strategy. How? Now, it is a means of policy and legal frameworks as well as administrative support. Now, if you see, all these three things are coming from the top. The state may establish attractive and fair economic incentives, because it is the duty of the state, the government, who should create these economic incentives so that it should attract the communities to manage the natural resources, whereby your resource conservation is happening because it has created an incentive. Your poverty alleviation is the goal of poverty alleviation is achieved, and your good governance is also happening, because if you are achieving poverty alleviation, if you are achieving this poverty reduction or alleviation, and you are having your natural resource conservation, this is happening because there is good governance. So all the tri-objectives, they are achieved, and if they are achieved, then you can say that it is a development strategy at the community level. Now, what is good governance? Good governance at the local level. It can be seen as both. If you have good governance, we can say that we have achieved the objective of natural resource conservation and poverty reduction as well. So good governance is also very important. And what it is the elaboration, it is the implementation and experience-based revision of resource management plans at local levels that determine the actual performance of community-based natural resource management on the ground. Last में क्या आ जाता है, that we have results and experience of implementing community-based natural resource management. कि जब आप local level पे, when you are implementing this phenomena of natural resource management, it's basically that people have experience, people have lived with these natural resources, among these natural resources for quite some time. And आपके जो gaps होते हैं, as we already discussed in the previous lectures, that the administrative, the national, the legal structures, they are coming from top. So दोनों में क्या होनी चाहिए? Synergy होना चाहिए. How people are looking towards these natural resources, how government is looking towards. अगर इन दोनों के दौरान coordination नहीं होगी, so there's not going to be good governance. और good governance नहीं होती, poverty alleviation and the goal of natural resource management is going to be disturbed. अब ये एक framework है which is known as the institutional setup in the national context. Let me just say, हमारे 3 goals थे. Number 1 was good governance, number 2 was resource conservation, and number 3 was this one, poverty reduction. ये तीनों आ जाता है. अब इनको करने के लिए what do we need? We need a management plan. And in good governance, what we are saying that defining the management plan, good governance, the management plan is like a business plan. It's a blueprint that how you're going to manage the resources.
And number 2, implementing and revising the management plan. As I said कि दोनों में synergy होनी चाहिए. जैसे जैसे changes आते हैं, the management plan is not something which is totally inflexible. It should be flexible जहाँ पे we can bring about these changes. अब management plan के अंदर क्या होना चाहिए आपका? Enhanced value of resource, equitable cost benefit sharing. सबसे पहले कि उस resource की value होनी चाहिए, एक economic incentive आपने create करना ना. और secondly, equitable cost benefit sharing. Your community-based natural resource management should not create inequalities. It should be creating equalities, equitable cost benefit analysis. ये ना हो that okay, the poor people are conserving the resources and the feudal lords are actually taking all the benefits. Now over here, this is quite clear. This is the first paraphrase. Second आपका आ जाता है. अब ये सारा कुछ आ रहा है, ये top से आ रहा है. Devolution and deconcentration and delegation. ये हमने 3 D's पढ़े थे, ये वाले. Devolution, deconcentration and delegation. Upward, downward. ये first periphery है. ये आपकी second periphery में ये devolution के जी आपने उनको devolute किया इनको. और the third आ जाता है जब हम policy frameworks national level पे enabling policy and legal framework establishing a fair and attractive incentive for community based natural resource management. And this is how it works. ये वाला जो है इसने total इन दोनों के साथ करना है और ये वाला इसने इन दोनों के साथ करना है. And in this way the whole system is institutional setup is worked upon. और ये two-way है. ये देखें over here what I wanted to show you that it's not just one way, it's both ways. And when the 2 ways is going on, that's much better. Then providing economic incentives and ownership at community level. अब हम बारी बारी करेंगे like how to provide these economic incentives, because remember until unless there is no motivation you can't make people to work, because this is a volunteer thing. So volunteer thing के अंदर आपने community के लिए कोई economic incentive पैदा करना है. Economic incentives for people to protect and invest in a particular natural resource are closely associated with their enforceable rights as well as the terms of trade prevailing for resulting product flows. Yani economic incentives are always there. If they are not there, they have to be created. और वो क्या करते हैं? They are given by the rights. कि जी अगर आपके पास कोई rights हैं, then you can actually create the economic incentives. उसके बाद आपका क्या आ जाता है? Owners and proprietors have the strongest incentives to invest in the maintenance or resource because they hold the right of excluding others from capturing the benefits of their investment. अब यहाँ पे एक आ जाती है प्रॉपर्टी राइट्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हमने पहले भी ये वाला इसमें पढ़ा. Enforceable rights. If I have a right that I can't let anyone in the forest, तो मैं ही उसमें से अपना incentive reap out कर सकता हूँ. And then the second point what they are trying to say कि जो owners होते हैं और जो proprietors होते हैं who actually own the resource, they reap much more benefits. They reap much more benefits out of this resource management क्योंकि वहाँ incentive ज़्यादा होता है. और जब incentive ज़्यादा होता है, it means that they can actually exclude people from sharing that benefit. Yani they are getting the maximum share of the pie. So if you have that property right or if you have that right on that particular resource, you have more opportunity to have more profit. Now अभी incentive की जो हम बात कर रहे हैं वो जो हम economic incentive की बात करते हैं, this incentive is even stronger if owners and proprietors can pass on these rights to their heirs. यानी अगर आप ये जो rights हैं I am the grandfather, I passes it to my son and then he passes it to his son, तो ये जो generational जो आप अपने उनको देते जा रहे हैं rights, इससे क्या होता है incentives आपके क्या होते हैं और strong होते जाते हैं because आप एक ownership आपने create कर ली और आप जो exclude कर सकते हैं that is becoming much easier because now it becomes a tradition, now it becomes a kind of law कि जी इन्हीं का right है सिर्फ यही resource for the last 30-40 years यही use करें, that's why it belongs to them, so they can reap more benefits out of it. अब जो claimants हैं they hold strong investment incentives than authorized and unauthorized users. But the propensity of these three categories
invest in the resource is likely to be rather small because their use of depends on goodwill of others. ये मैं अभी आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाता हूँ, which is very interesting. I take Eleanor Ostrom's name a lot, and one of the reasons I take उनका इस property rights के ऊपर natural resource management पे बहुत काम है. Now if you see in the vertical section what it's given, कि एक आपका unauthorized user है, एक आपका authorized user यानी इसको right दिया हुआ, एक आपका claimant है, एक आपका proprietor है और एक आपका owner है. ये आपकी different positions हैं. अब rights क्या क्या हैं जो आपको दिए हुए हैं? नंबर 1 access and withdrawal, नंबर 2 उसकी मैनेजमेंट, नंबर 3 उसकी एक्सक्लूजन एंड नंबर 4 उसकी एलियनेशन. ये हैं डिफरेंट राइट्स और ये हैं डिफरेंट पोजीशंस के. आई मे बी एन अनऑथराइज्ड यूजर, आई मे बी एन ऑथराइज्ड यूजर, आई मे बी अ क्लेमेंट, आई मे बी अ प्रोप्राइटर, आई मे बी ओनर. Remember, this is very important. Understand this matrix and then you can easily see how to implement this community-based natural resource management systems. और problems को आप easily identify कर सकते हैं. अब जो आपके rights आपको दिए जाते हैं, access and withdrawal, full fledged. नंबर 2 मैनेजमेंट में दे सकता हूँ. नंबर 3 आपको एक्सक्लूजन का भी राइट दे सकता हूँ. दैट ओके यू कैन टेल पीपल नॉट टू कम हेयर, नॉट टू गो देयर, यू कैन एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम देयर. एंड एलियनेशन यानी बिल्कुल ही आप उनको जीरो उनकी इंटरेक्शन कर. ठीक है. अब इसमें से अगर इफ यू लुक एट इट, सो 4 डिफरेंट राइट्स हैं. इनमें अनऑथराइज्ड यूजर के पास कुछ भी नहीं है, सो ही इज द वीकेस्ट प्लेयर. नंबर 2 ऑथराइज्ड यूजर, यस उसके पास एक्सेस एंड विथड्रॉल है. क्लेमेंट के पास एक्सेस एंड विथड्रॉल और मैनेजमेंट है. प्रोप्राइटर के पास एक्सेस, मैनेजमेंट एंड एक्सक्लूजन है. बट इफ यू सी द ओनर, all the 4 rights are there. Access and withdrawal, management है, exclusion right है and alienation है. He is the strongest among all the players. उसके पास सबसे ज़्यादा incentives हैं. Now let's define these rights. अब ये rights कौन-कौन से हो सकते हैं? Number 1, access right. It is the right to enter a defined physical property. ठीक है, यानी आपने उसको right दिया हुआ कि ठीक है he can use this kind of physical property. Withdrawal right, it is the right to obtain the products of a resource. Catch fish, appropriate water, collect forest products के भी आप fishing कर सकते हैं. That is the withdrawal right. यानी आप उस natural resource को use करके उसमें से आप चीज़ें access कर सकते हैं, आप उसको product ले सकते हैं. Number 3, management right. Management right क्या होता है? It is the right to regulate internal use patterns and transform the resource by making improvements. ठीक है. To regulate the internal use pattern, आप उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं and transform the resource by making improvements. For example, आपकी ग्रुप ऑफ फिशरमैन है, उन्होंने क्या कर दी? जोनिंग कर दी है. अब जोनिंग करने से क्या हो गया कि जी आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉलर्स या आपके डिफरेंट काइंड ऑफ फिशरमैन डिफरेंट जोन्स में जाके फिशिंग कर सकते हैं. उन्होंने क्या किया? मैनेज कर लिया रिसोर्स को. देन कम्स योर एक्सक्लूजन राइट. एक्सक्लूजन राइट होता है कि यू हैव द राइट टू डिटर्मिन हु हैव एक्सेस राइट और the right, that right may be transferred. यानी आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं और किसी को बता सकते हैं जी इसके पास एक्सेस है या उसके पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कहते हुए एक फॉरेस्ट यूजर ग्रुप लिमिट्स एक्सेस ऑफ देयर फॉरेस्ट फॉर फायरवुड कलेक्शन फॉर फीमेल मेंबर्स अबव सर्टेन एज. उन्होंने कहा जी फीमेल्स इस एज से ऊपर नहीं आ सकती फॉरेस्ट के अंदर टू कलेक्ट द फायरवुड. ये क्या है? एक्सक्लूजन राइट. क्या आप राइट्स को डिफाइन कर सकते हैं, यू हैव दैट पावर. एलियनेशन राइट क्या होता है? इट इज द राइट टू सेल और लीज और आइदर और बोथ द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सक्लूजन. ठीक है. अब अगर आप लीज भी कर दें या सेल कर दें किसी नेचुरल सोर्स को, राइट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सक्लूजन, इसको कहते हैं हम एलियनेशन राइट. अ फिशर हु leases out his right to put up nets in a particular location for fishing season. जब आपके दोनों आ जाए, एक आपका आ जाए मैनेजमेंट और एक आपके एक्सक्लूजन, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है? एलियनेशन राइट आ जाता है. अब सेकंड गोल. फर्स्ट हमने बात की कि जी आप ये किस तरीके से राइट्स और कौन से यूजर्स को हम लेके आते हैं और हम इंसेंटिव कैसे क्रिएट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन. अब पॉवर्टी रिडक्शन इसके अंदर क्या है? द इकोनॉमिक रैशनल बिहाइंड कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू ओपन रिसोर्स यूज.
resources वहीं पे हैं, लेकिन earlier it is an open access, anyone can use it, it's a free rider. लेकिन अब क्या हो रहा है that now we are trying to manage it and the community is managing it, that the total resource value can be maintained. यानी जो forest है, just for example हमने forest की monetary value ली, हमने कहा the forest is for $10 million. अब अगर over the period of time the $10 million value has reduced to 2 million, इसका क्या मतलब है that our resource is being depleted, resource is not being managed, resource की open access थी, सारों ने forest को काट दिया. Now what we do is we try to assess it through, we try to conserve it through community management system, and what we are doing is that we have started assigning a value and we have given them the management plan and they are managing. अब वही जो 10 million है, either it is constantly 10 million or वो 12 million होता चल रहा है, यानी it shows a positive trend that the community is actually managing the resource. अब यहाँ पे देखें that the total value can be maintained, वही 10 million रहे और enhanced. यहाँ हमने enhance कर दी, 10 से 12 million उसके लिए ज़्यादा दरख्त लग गए. And that the cost and benefit of management, cost or benefit जो BC analysis होता है, that can be distributed equitably. यानी तमाम community members उस resource से फ़ायदा उठाएं. It is not just for classes or it's not for the masses, it's for everyone. With a reasonable time horizon, time इसके अंदर important है, experience a net gain or at least zero loss. यानी it's a zero loss. यानी जितना 10 million था 10 million ही रहे, it's a zero loss. आप resource को use भी कर रहे हैं but still उसकी economic value क्या है वो constant है, और it has enhanced, so it gives you a positive sum or it gives you a zero sum, no negative sums. But community based natural resource management situation of de facto open access, but rather that a natural resource is controlled by few actors. अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? For example, feudals की मैं बात करता हूँ. There are just few people, few rich people who are maintaining the resource. So then it will, instead of maintenance of the resource, वो क्या कर देगा? Poverty alleviation के goal को achieve नहीं करेगा. ठीक है? So it is just highlighting to some people. It is not just towards a major group of people. So feudal lords, they are experiencing the net loss. Now, it is crucial that governments establish fair and attractive economic conditions. As we said, that economic incentives are very important, but who is actually creating it? It is basically the government who has to create such incentives. अब natural resource to come under community based, अगर जो natural resource अगर हम उसको community based में लेके जाना चाहते हैं, it should not be at such a point of deterioration that organizing it brings few or no net benefits to the community. एक ये बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है that when we are talking about this natural resource management, the way we portray it, it should not be in such a manner कि जब resource अब totally unmanageable हो गया है, अब no one can actually repair it, no one can actually mend it, government के हाथ से बात निकल चुकी है, and then they say okay जी, let's practice community based natural resource management or community they will manage it. That's wrong approach, because if you see the earlier bullet, I'm saying that it's the government who needs to, it's the state who needs to create incentives, क्योंकि community का भी तो बीच में benefit होना चाहिए. This should not be the model that okay, if the resources are not being managed or resources have been deteriorated at such a level कि अब उनको दोबारा फिर से हम वापस उस state में नहीं ला सके, तो आप कहें let's give it to community, let's practice community based natural resource management system. No, the state needs to give them in such a state जहाँ पे उसके साथ economic incentives attach होने चाहिए. However, advantages को हम सिर्फ financial terms में ना रखा करें. Safe seasonal access to land and water can be fundamental for sustaining livelihood practices in dry land. सिर्फ आप जब मैं economic incentive कहता हूँ, remember it is not just the financial one. There are certain non-financial incentives. For example, ये जहाँ पे मैं लिखा हुआ है, safely seasonal access to land and water can be fundamental for sustaining livelihood practices, for instance in dry lands. क्योंकि आप इस किस्म के benefits भी दें which helps them in understanding that how to conserve the dry lands. Now, if people have few or no realistic alternatives but to continue ecologically non-sustainably utilization,
अगर लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है कि जी अगर आप पानी को कंजर्व इस तरीके से करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, या पानी में अपना ड्रेनेज मत, गंदा पानी मत मिक्स करें. सो व्हाट विल हैपेंस दैट community based natural resource management must include external technical and financial help to improve resource and local livelihoods. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी बेस्ड में जिस हम शुरू में बात कर रहे थे कि जी इतनी डेवोल्यूशन दे दें, डीकंसंट्रेशन कर दें, दे स्टार्ट मैनेजिंग द रिसोर्स, बट इफ देयर इज नो सेकंड अल्टरनेटिव, इफ दे आर अनएबल टू मैनेज इट, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही दैट इट लीड्स टू द पाथ ऑफ sustainability and the resource use is still unsustainable, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कम्युनिटी को external actors की help लेनी चाहिए. That may be your NGOs, that may be government agencies, that may be some international donors that okay help us to manage the resource. If you do not have that capacity, if still the resource use is unsustainable, अगर उसकी value 10 million थी और अगर 8, 7, 6 होती जा रही है, it means that we are not maintaining the economic value of that particular natural resource, so it's better to take the external help. But if the resource is utilized far below the capacity, वहाँ पे तो हम over usage कर रहे थे ना, एक state ये भी हो सकती है that I am using the resource quite a lot, so that is unsustainable. तो इसमें मैंने कहा मैं external help ले लेता हूँ. Second situation might be that if the resource is there and I am not using it, I am underutilizing it, तो फिर क्या हो सकता है कि local people में भी bother ही ना करें community based natural resource. वो कहें जी हम तो resource को use ही नहीं कर रहे, it is so much productive or its economic value is as it is and there is no depletion of the resource, so we no need for CBNRM, because उसमें अगर आप उस resource को use ही नहीं कर रहे तो उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी तो है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट. तो उसमें जब उसकी मेंटेनेंस करेंगे, व्हेन यू आर मेकिंग द एफर्ट्स, द कॉस्ट्स में बिकम हायर देन द बेनिफिट्स, कॉस्ट्स ऑफ managing that resource as compared to the economic benefits that the communities are getting out of it. So therefore that is an important trade-off between either you are using the resource much more as it should be, तो वहाँ पे आप external help ले लें, और अगर आप resource को under use कर रहे हैं तो then it's better that okay leave the resource the way it is rather than managing it, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, आपकी costs ज़्यादा हो जाएंगी and your benefits will be less. Now this जो मैं आपको फिनोमेना बता रहा था, अगर हमने रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज रखा हुआ है तो दिस कैन चेंज रैपिडली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने ब्रिज बना दिया और एंड पावरफुल एक्सटर्नल एजेंट्स, जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, मसलन गवर्नमेंट है, मसलन और कोई लोग हैं, pharmaceutical companies हैं. Nowadays pharmaceutical companies are so much inclined in acquiring the property rights of these natural resources in the developing countries, because यहाँ पे हमारी property rights का as such इतना अच्छा system नहीं है. What they do is they come acquire the rights on these medicinal plants and then they start producing medicine at a cheaper rate, and developing countries कुछ नहीं कर सकते because under law they have got the property rights. So अगर कोई इस किस्म की एक ब्रिज बन जाता है और external actors सारे natural resource को access कर लेते हैं जो कि शुरू में under utilized था, तो फिर क्या होगा, then over utilization हो जाएगी and then you still have to manage the resources. ठीक है, so the management plan should be in such a way कि अगर वो under utilized भी है तो ठीक है, अपने initiatives या अपने वो जो interventions है वो इतनी रखें कि आपके cost to benefit equalize हो जाए. अब अगर इस किस्म की situation आ जाती है that some external actors come and dominate the natural resources जो कि पहले community manage कर रही थी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, it should be कि हमें इंफॉर्मेशन कैंपेन्स करनी चाहिए, हमें लोकल कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, हमें एजिटेशन होनी चाहिए फ्रॉम सिविल सोसाइटी, ताकि बिफोर द रिसोर्स इज रेडेड बाय दीज एक्सटर्नल एक्टर्स देयर इज समथिंग ऑन विच एक्शन कैन बी टेकन अपॉन. पहले ही लोगों को सेंसिटाइज कर देना चाहिए कि दीज पीपल आर कमिंग. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू सपोर्ट नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, पहले हमने बात की इंसेंटिव्स कैसे क्रिएट करना है, फिर हमने पॉवर्टी एलिविएशन की बात की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन रिक्वायर्स द हार्वेस्ट नॉट टू एक्सीड इंक्रीमेंट ओवर अ लॉन्गर टर्म. वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, बहुत प्यारी है. दैट रिसोर्स कंजर्वेशन रिक्वायर्स व्हाट, हार्वेस्ट नॉट टू एक्सीड इंक्रीमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यानी
आप रिसोर्स को यूज करें, वी आर नॉट प्रिजर्विंग, वी आर कंजर्विंग द रिसोर्स, लेकिन इस तरीके से आप कंजर्व कर रहे हैं कि आप उसको हार्वेस्ट तो करें, आप रिसोर्स को, फिश भी हम यूज कर रहे हैं, हम दरख्त भी काट रहे हैं, वी आर यूजिंग वाटर, बट वी आर यूजिंग इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट एक्सीड इंक्रीमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि उसका जो यूजेज है वो ज्यादा ना हो जाए इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इस सिचुएशन को करने के लिए यू नीड सम एक्यूरेट नॉलेज कि जी आपका जो ग्रोथ है, आपके जो एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ है ऑफ द रिसोर्स वो कैसी है, एज वेल रिलायबल रिकॉर्डिंग ऑफ हार्वेस्ट वॉल्यूम्स, कि आपके पास डेटा होना चाहिए कि आप कितनी फिश कैच कर रहे हैं, आप कितने दरख्त काट रहे हैं। सो टू इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। नंबर वन कि जी आपके रिसोर्स की ग्रोथ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कट वन ट्री, सो मे बी इट विल टेक 20 और 10 to 15 ईयर्स एक दरख्त को दोबारा फिर से ग्रो करने के लिए। क्या प्रॉबिलिटी है अगर मैं एक दरख्त काटता हूँ और एक ही दरख्त लगा देता हूँ कि वो वाला पौधा वाकई दरख्त बन जाएगा। सो आई नीड सम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट what is the probability that if I cut 5 trees, so how many trees can convert into 5 trees? And the second one is that we need to calculate our harvest time, कि जी हम कितना harvest करते हैं, कितना एक resource को use करते हैं, and with what frequency. Such things have to be noted down. अब कई communities के पास क्योंकि ऐसी technical knowledge नहीं होती है, because they don't know how to estimate these harvest levels, और ये जो है अपना कितनी एक रिसोर्स कितनी जल्दी डिप्लीट होती है, किस तरीके से उसका यूसेज हो रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डू नीड एक्सटर्नल हेल्प। अब इसमें कौन सी आ जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, आपकी एनजीओज आ जाती हैं, एंड दे माइट गिव यू द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, जिसमें आपको पता चल जाता है दैट ओके what is the extent and growth of the resource and how much harvest they are doing of that particular resource. Now, top down, जो ऊपर से नीचे आपके well defined requirements to resource management planning at community level entails the risk of re-centralizing control. पहले हम बात कर रहे थे decentralizing control, लेकिन अगर टॉप डाउन इंटरवेंशंस आएंगे, वो आपको बताएंगे कि ये रिसोर्स ऐसे यूज करना है, ये हार्वेस्ट जितनी है, तो दे से दैट देयर माइट बी अ फियर दैट इट माइट गो टू द रीसेंट्रलाइजेशन. Re-centralization, control over the resource, and if this make local communities overly dependent on external agents in fulfilling technical criteria officially justified through environmental concerns. कि जी आपकी टॉप डाउन उन्होंने कोई अपने कंसर्न्स शो किए हैं, गवर्नमेंट ने, स्टेट आपको कहता है कि जी आपने हार्वेस्ट इतना करना है, आपने इतने दरख्त लगाने हैं, और आपको उसने सेट क्राइटेरियाज दे दिए हुए हैं, तो मे बी इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कम्युनिटी टू फुलफिल इट, क्योंकि उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है. एंड फिर वो कहते हैं जी द कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अगर कम्युनिटी खुद कर ही नहीं रही एंड दे आर सीकिंग एक्सटर्नल हेल्प एंड दे आर टू मच डिपेंडेंट अपॉन इट, तो वही डिसेंट्रलाइजेशन किस में चेंज हो सकती है, आपकी रीसेंट्रलाइजेशन में चेंज हो सकती है. नाउ द अनदर पार्ट आफ्टर पॉवर्टी, आफ्टर दिस रिसोर्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नेंस, द थर्ड ऑब्जेक्टिव. इसमें गवर्नमेंट में हम क्या बात कर रहे हैं, an enabling policy and legislative framework combined with adequate measures to estimate allowable harvest levels do not guarantee success. Okay, पीछे हम बात कर रहे थे कि भी this is good for natural resource management, but let me just tell you, an enabling policy and legislative framework, from where it is coming from the top, state की तरफ से. Then इनको किसके साथ कंबाइन किया, इस पॉलिसी और इस लीगल स्ट्रक्चर को भी कंबाइंड इट विद एडिक्वेट मेजर्स टू एस्टिमेट अलाउबल हार्वेस्ट. हमने वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले ली कि जी अगर आपने किसी रिसोर्स को कंजर्व करना है तो आपने कितना उसको हार्वेस्ट करना है. बट इट सेज इट डज नॉट इंश्योर सक्सेस, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. व्हाई? कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैन स्टिल be a failure. Why? Because of two reasons. Now these two reasons are, number one, inefficient rule enforcement, allowing free riders to overhead harvest. क्या आपका लॉ ऐसा है, आपने किया तो है, लेकिन फ्री राइडर्स आ जाते हैं, they just take the resources away.
इवन दो आपको हार्वेस्ट का पता है, इवन दो आपके पास एक अच्छी पॉलिसी भी है, इवन दो आपके पास सब कुछ है, बट द वे इट इज हैपनिंग दैट दे जस्ट इन्वॉल्व other free riders and they just take the resources away. So free riders की जो problem है, that can be an impediment in terms of this local governance. So that is not a good governance. Second, inequitable distribution of costs and benefits. आपके जो cost and benefit है उसके अंदर equality नहीं है, leading to breakdown of management rules and subsequent over harvesting or permanent marginalization of certain groups. अब ये जो अगर inequitable आपकी शेयरिंग हो रही है कि कॉस्ट कोई और बेयर कर रहा है, बेनिफिट्स कोई और बेयर कर रहा है, now what happens in that it may leads to the breakdown of management rules. I give you a very interesting example in the earlier lectures and I hope you remember. मैं आपको कारेज का हमेशा बताता हूँ कि basically an underground water management system managed by communities themselves, और जब उसके अंदर एक डाइवर्जेंस आई, जब उसके अंदर आपने मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी उनको दी और सार्कलों ने ट्यूबवेल लगा दिया, वाटर टेबल कम हो गया, और वही सिस्टम, वही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाटर मैनेजमेंट विच वाज डन बाय ट्राइबल्स, विच वाज इंक्रीजिंग द सोशल नेटवर्किंग, सोशल कोहेजन, अब वो उसमें क्या हो गया कि गैप बिटवीन हैव और हैव नॉट ज़्यादा हो गया, कॉस्ट्स कोई और बेयर करता था, बेनिफिट्स कोई और ले जाता था, एंड फॉर दैट रीज़न आपका कारेज का सिस्टम फ्लॉड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया. तो लोकल लेवल पे चीज़ें इस तरह से भी फेल हो जाती हैं. देन व्हाट डू यू डू? एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, और यहाँ पे वर्ड वो यूज़ करता है और जो कि बुक में काफ़ी यूज़ होगा, अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट्स. दिस विल बी यूज्ड अ लॉट कि जी आपकी या फिर गुड गवर्नेंस हो, या उसको इसके साथ कहता है अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट्स is the only feasible way to prevent failure of community-based natural resource management at local level. अब वो क्या है? हमारे दो चीज़ें हैं. Number one, the management plan that regulates the use of resource. ठीक है, एक आपका मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए. If you remember जो मैंने 3 सफ़ेयर आपको डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर there was one management plan that is perfectly important for your natural resource management. Number two, रूल्स होने चाहिए. रूल्स दैट एस्टैब्लिश कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव चॉइस, यानी क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग इकट्ठे करनी है, तो रूल्स दैट एस्टैब्लिश कंडीशंस फॉर कलेक्टिव चॉइस, नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस. कलेक्टिव चॉइस आपकी होनी चाहिए विद इन अ ग्रुप इमीडिएटली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द रिसोर्स, के जो ग्रुप रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है उनकी कलेक्टिव conditional choice होनी चाहिए. The management plan, in other words, nested within conditions of collective choice. अगर ये दो चीज़ें हैं, yes, that is what we are saying appropriate decision making arrangements. के management plan हो, और secondly आपकी क्या होनी चाहिए, conditions of collective choice होनी चाहिए. Now, what is this management plan? पहले भी हमने पढ़ा, लेकिन let me just in that diagram, let me just rephrase it again. The management plan defines which products may be extracted by whom, when, how and in what quantities. ये हमें management plan बताता है. और क्या बताता है? That these rules should be guided by the productive capacity of the resource and by equity considerations to establish a fair distribution of cost and benefit among community members. यानी आपकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. जिस हमने पहले कहा कि इक्विटेबल नहीं होगी तो आपकी लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हो सकती. सो इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल एंड देयर शुड बी रूल्स ऑफ डूइंग इट. ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट प्लान डेवलप कौन करता है? मैनेजमेंट प्लान्स आर डेवलप्ड बाय द लोकल मैनेजमेंट बॉडीज इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव चॉइस. नॉट one person, but all the people have that voice and they all get together on that, through which the purpose of management is defined कि हम क्यों इस रिसोर्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं, services, moreover capacity of the group to make a collective decision, कि उस ग्रुप की कैपेसिटी क्या है, क्या वाकई वो डिसीजन ले सकता है या नहीं है, एंड जब उसने डिसीजन ले लिया है इट शुड बाइंड अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, इट शुड बाइंड अदर इंडिविजुअल्स के जो भी कलेक्टिव चॉइसेस में उन्होंने हमने डिसीजन दिए हैं वो बाकी इंडिविजुअल्स को क्या करें, दे शुड फॉलो इट. इट शुड बी इन सच अ वे. देन
अभी तो लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि हाउ लोकल एट द लोकल लेवल थिंग्स आर हैपनिंग. गवर्नमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स कैन आल्सो प्रमोट अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट्स. इसको गुड गवर्नेंस भी कहते हैं एट द लोकल लेवल. किस तरह? हमने दो किस्म के लेजिस्लेशंस पढ़े थे, आउट ऑफ विच थ्रू नॉमिनल रिसोर्स लेजिस्लेशन. Or it should be done in the democratic condition of collective choice so that all members of community get opportunity to participate. अब किस तरह ये nominal आपकी हो रही nominal resource legislation? Number one, defining आपकी क्या define करना चाहिए, what is the purpose of natural resource management, और जो resulting management plan हो इसकी enforcement कैसे की जाए, उसके बाद कौन कौन से products किस किस community को benefit देगा, कौन कौन से कॉमन रिसोर्सेज हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी. कम्युनिटीज मस्ट ऑल्सो होल्ड अथॉरिटी टू कंट्रोल फ्री राइडिंग बाय पनिशिंग डिफॉल्टर्स. फ्री राइडर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, which don't pay anything, which do not incur any cost, and they just take all the benefits out of it. So उन free riders को भी punish किया जाए, उनको भी penalize किया जाए. So this is how we can promote appropriate decision making arrangements. This is how we can promote the good governance, and that is what number सबसे पहले कि what is the purpose of the natural resource management, and number two कि आप उस management plan के अंदर बताओ कि what is the who are the users, उसके बाद when are they going to use the benefit, उसके बाद common resource है कि आपकी collective decision making है, and the way you are using the resources it should be in such a way कि वो free riders को क्या करते हैं, eliminate करते हैं. Then अब इसके अंदर जब हम डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट्स या गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हमें जो एलीट्स होते हैं सोसाइटी के उनको हमने क्या करना चाहिए, उनको भी कैप्चर करना है. उनको कैप्चर इस तरीके से करना है कि उनकी प्रिवेंट करना है सो दैट दे डू नॉट डोमिनेट द होल प्रोसेस. और आपने जो लोगों को इन्वॉल्व किया है, द लोकल इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटीज आर मेड डाउनवर्ड्स अकाउंटेबल टू कम्युनिटी मेंबर्स दे रिप्रेजेंट. सिर्फ एलीट्स को ना रखा जाए, बिकॉज एलीट्स क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे. लेकिन जो लोकल्स भी उनको हायर किए, जो लोकल इस प्रोसेस में आते हैं, दे शुड बी participating in such a way that they are accountable to the people. Accountability and transparency का जो element है, that is very important. Then किस तरह किया जा सकता है, how we can make them accountable, how we can keep these elites away from it कि they don't dominate the process. So in practice क्या किया जाता है, हमारी कुछ legislative requirements हैं for regular management committee elections, frequent elections. उसके बाद elections अगर आप करवाते रहते हैं, so people who are more favorite they just give the chance. So आप ये जो एक election system है, आप इसके थ्रू क्या लेके आ सकते हैं, transparency लेके आ सकते हैं, and you can have better governance structures. Then you can have these kind of committees, you can have these elections by which these people just join over, or people who have showed work they will be elected, और जो काम नहीं करते they won't be elected into it. Sometimes क्या होते हैं कि जी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि when we are defining these collective rights, when we are developing a good governance model, what happens is कि जी ये जो priority के issues आ जाते हैं, जो men, women, pastoralists, farmer within a defined community do not give equal priority to all kinds of products. For example, farmer की priority फर्क है, pastoralist की फर्क है, women की फर्क है, men की फर्क है, that a given resource may deliver, and this can source conflict. Our next lecture will be on conflict and natural resource management. So यही अभी बता रहे हैं that a given resource may deliver and this can be source of conflict, including कि parties को क्या कर देती है, weak कर देती है, यानी there is no equitable distribution of cost and benefits. Benefits are being reaped by one group and all the costs are being levied on other group. So nominal community based natural resource legislation, जो हम पीछे nominal laws बना रहे थे, however alleviates such problems by providing establishment of interest based resource. यानी ये जो laws आ जाते हैं, जो rules regulations आ जाते हैं, they actually help in maintaining these natural resources. Or women groups which hold exclusion rights vis-a-vis the larger community which they are a part. ठीक है, so therefore ये जो nominal law है, this at last rescues us कि जी अगर आप transparency, accountability, if you want to manage the resource in a better way, if you want to have the equitable results, तो आपके ये nominal legislation helps you out. How to monitor, ठीक है,
एक एक्टिविटी हो रही है, अब जब तक उसकी आप मॉनिटरिंग नहीं करते आपको उसकी सस्टेनेबिलिटी की इंश्योरिटी नहीं मिलेगी. हाउ टू डू इट? नंबर 1, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है मीडिया including interest organizations, agitations, they are a biggest source of your monitoring because they are like the watchdogs. They are looking at it कि how you are managing the resource. مثلا tree hugger movement जब start हुई, उसके बाद ग्रीन पीस है, WWF है, तो ये जितने भी आपकी NGOs हैं, environmental organizations, they are looking at the resources and they are keeping a close eye that how to monitor these activities, how community is managing these resources. कोई elite group तो नहीं आ गया by which they are actually exploiting the resources. So therefore what we are doing is that we are actually maintaining the resource in such a manner that no external pressures are actually levied on it. And if कोई इस किस्म की बात होती है, then what happens that these media groups then they start projecting the put it on the media, share the information, bring into the state into it that okay these things are happening. Number 2, किस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. when we are making the plan और जब आप when you're monitoring it तब भी आपको information चाहिए and accurate information. अब structured information कौन सी होती है? Structured data collection on the progress of implementation should provide reliable quantitative information. Number 1, किस चीज़ की? The work carried out to implement CBNRM. कि जो जो आपने काम किया है in order to make CBNRM implement, आपके पास उसका information होनी चाहिए. Number 2, the area under CBNRM. वो आपको पता हो कि आप किस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे वो वाली इंटरवेंशन टेक प्लेस हुई है. एंड नंबर 3, the number of communities as well as households officially involved in CBNRM. यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली द कम्युनिटीज ही होती हैं CBNRM में, तो दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, तब आप उसको मॉनिटर प्रॉपरली कर सकते हैं. उसके बाद more qualitative data on implementation progress should include successes, failures and areas under improvement. Qualitative data आपके पास अगर होता तो वो आपको ये बताए. These systems should be simple. जितना आप एक सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे, मॉनिटरिंग उतनी डिफिकल्ट होती जाएगी, उतनी आपको अपना चेंज आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. ठीक है. सो within the existing monitoring systems and it should ensure sustainability. Number 2, वो ये जो है आपका मीडिया और ये जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आइडियली दे शुड बी यूज टू एडजस्ट द पॉलिसी. कि जो आपकी स्टेट की पॉलिसी आ रही है, आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, इट शुड बी अ फीडर टू द पॉलिसी, legislative framework and implementation strategies in order to correct failures and sustain the and enhance the positive effects of CBNRM. कि भी अगर ये जो आपने मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये बस सक्सेस या फेलियर ना होता है, बल्कि इट शुड गो बैक टू द स्टेट एंड इट शुड बिकम अ फीडर फॉर योर पॉलिसी, फॉर योर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, सो दैट जो आपकी वीकनेसेस यहाँ पे रह गई हैं या जो आपने लेसन्स यहाँ पे लर्न किए हैं, वो फिर से उसके पॉलिसी के अंदर चेंज करके देन द गुड गवर्नेंस कैन एक्ट इन अ बेटर एंड सस्टेनेबल मैनर. फिर आपका आ जाता है assessing the degree to which community-based natural resource management is achieving its stated objectives, poverty reduction, resource conservation and governance. 3 हमारे try objectives हो गए, calls for a different approach and should probably be carried out by organizations that are not directly engaged in the implementation as such. Because when we are doing the monitoring has to be done by third party, इसीलिए we have external auditors. क्योंकि अगर आप अंदर के ही लोग monitoring शुरू कर देंगे, ठीक है ना, monitoring या evaluation start करेंगे, तो then what happens that it will actually bring biasness. So that's why I say calls for a different approach. It should be carried out by organizations that are not directly engaged in implementation as such. क्योंकि अगर implementing body ही उसकी मॉनिटरिंग करेगा तो it may bring biases. So these could be independent research teams. कौन कर सकती हैं? There can be independent research centers, NGOs हो सकती हैं, university departments हो सकते हैं, which are capable of undertaking such studies. In the recent past, these monitoring and evaluation has become very important. Why? Because
दे से कि जो evaluation होती है या जो monitoring होती है, monitoring is a regular thing. Evaluation is basically worth or value of that particular project. So if we have actually implemented one project, we have taken time out of it, and we have we are implementing things on it. Now what happens is कि जैसे जैसे टाइम पास करेगा, ठीक है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, एंड एज यू आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन वो आपको क्या बता रहा होता है, आइदर योर प्रोग्राम इज़ अ सक्सेस और इट इज़ अ फेलियर. प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जब प्रोग्राम के अपने ही लोग, यानी जब लोकल लोग खुद ही ये असेसमेंट करेंगे, तो मे बी उनके अंदर बायसनेस आ जाए, और मे बी दे आर नॉट लुकिंग आउट थ्रू द लेंस बाय विच एन एवैल्यूएटर लुक्स आउट इट. सो व्हाट दे यूजली प्रेफर इज कि जब मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग से ही आपका जो सक्सेस और फेलियर पता चलता है, और दैट बिकम्स अ फीडर फॉर योर पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स. बट monitoring has to be done by a third party, preferably, ठीक है, preferably third party, क्योंकि they are much better, they are in a much better position in terms of evaluating such things. Now, CBNRM in terms of poverty alleviation. अब poverty alleviation में क्या आ सकते हैं? The effects of community-based natural resource management in terms of poverty alleviation and equity can be assessed through interviews. यहाँ सिंपल, अगर हम monitoring के अंदर अब सबसे पहले अगर हम poverty alleviation को अगर हम assess करें तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं? by interviews and by simple random samples of communities. कि जी वाकई आपके इन initiatives से जब आपने इस resource को manage किया, it has actually alleviated the poverty or not. The purpose, it is not to document overall value flow from a given resource under CBNRM, which including how cost and benefit are included, but basically we are trying to say कि जी आपकी poverty alleviate हुई है या नहीं हुई. The distribution of cost and benefit among communities and rest of the society may be assessed by looking at the profit margins in the value chain. Cost and benefits को हम profit margins के through दे सकते हैं कि आपने एक फिशरी ली, फिश यहाँ से ट्रैवल करती है इंडस डेल्टा से लेकर अगर बाहर तक जाती है, वो एक्सपोर्ट हो रही है, तो क्या कितना वैल्यू उसकी भी इंक्रीज हो रही है. दोज आर द बेनिफिट्स व्हिच कैन बी मोनेटाइज्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स. देन दिस विल इंडिकेट whether officially intended or unofficial market interventions as well as market conditions result in producer prices that will support or undermine the economic rationale for community base. यानी वो जो रिसोर्स से आप प्राइसेस, जो रिसोर्स को आप लेके उसको आप सेल आउट करते हैं, उससे जो वैल्यू चेन आपकी इंक्रीज हो रही है, इज इट हेल्पिंग और इज इट वर्सनिंग द सिचुएशन. अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा शुड टेक डेमोग्राफिक एंड जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इनटू अकाउंट. कि जब हम पॉवर्टी एलिविएशन को जब हम असेस कर रहे हैं तो उसमें हमें डेमोग्राफिक डेटा भी लेना है. देन रिसोर्स कंजर्वेशन पे क्या बेनिफिट होता है या उसका किस तरह इफेक्ट हम किया जा सकते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स natural resource management system on resource conservation can be assessed किस तरह? by interviews with random samples of communities. हमने उनको इंटरव्यू किया, आपने कहा जी बारिशें अब ज़्यादा हो रही हैं, दरख्त अब ज़्यादा लग गए हैं, पानी अब साफ़ हो गया है, and by using this participatory technique you can have this information, लेकिन by regular intervals. यानी मे बी पहले दिन every month or every 6 months you are taking this information, फिर आप उसको collaborate कर सकते हैं, उसको corroborate कर सकते हैं जी whether the responses that the community was given was it correct or not. अब इससे हमें ये भी पता चल जाता है that how people are perceiving development, कि लोग development को किस तरीके से देखते हैं, and how they are managing it, and it will also give you a quantitative and qualitative pictures of the resources and the resource use. ये जो हम information लेंगे on the natural resource usage from the communities. अब दोनों की जो inventories हैं, it is important for the resource development and it should be understood fully. उसके बाद अब the next that we are going to talk about it is on governance. Governance के ऊपर it should be assessed on the basis of interviews with households, with random samples of communities and analysis of community records, management plan revisions and as accounts. ये सारा governance के अंदर आ जाता है. लेकिन if you see in all the three we are using the primary method, interviews, meeting the community directly, not just survey कि आपने एक फॉर्म भरवाया and that's it, यहाँ आपने कोई पुराना डिस्ट्रिक्ट का डाटा उठाया और उससे आपने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गई है. It needs a
primary data, and the purpose should be there to document development in decision making processes resulting in cost benefit sharing. Good governance is that thing. That includes documentation of stakeholders, यानी stakeholders के documentation की positions in order to evaluate क्या क्यों आप उनकी positions ले रहे हैं stakeholders की, कि कहीं कोई elites, certain elites have captured more benefits, ताकि आपकी जो resources की जो division हुई है वो क्या equitable हुई है, या जो elites हैं उन्होंने ज़्यादा benefit ले लिया और poor ज़्यादा poor हो गए हैं, whether certain groups are becoming increasingly marginalized. That's why this monitoring is very important from poverty alleviation, from governance and from resource management perspective. नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, यही नहीं कि बस आप लोकल्स को ही आप देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशनल लेवल ऑल्सो. अब उसके अंदर हमें क्या करना होता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू डॉक्यूमेंट वेदर गवर्नमेंट्स आर नंबर 1 consolidating community-based natural resource management, or rather re-centralizing resource management through directives, amendments to nominal and functional रिसोर्स लेजिस्लेशन के वो डिफरेंट लॉज करते जा रहे हैं कि जी ये भी कम्युनिटी ने करना है, ये भी कम्युनिटी ने करना है. आइदर इट इज decentralization or re-centralization looking at their activities. We are monitoring important. Promoting and delaying implementation of community-based natural resource management on ground. कि जी either government promote कर रही है या delay कर रही है by making more and more laws, by making more and more procedures more cumbersome, and actually spending resources on promoting CBNRM. ये भी हमने देखना है गवर्नमेंट कितना actually spend कर रही है in order to promote community-based natural resource management. Now, effects of CBNRM on governance are indictated by number 1, the existence, the number of members or activities in CBNRM interest organization. कितने उसके अंदर members हैं, उसके बाद कितनी मीडिया पे debates हुई हैं इसके बारे में, उसके बाद कितने कोर्ट केसेस इसके अंदर आए हैं, particularly where communities and interest group organizations are making these higher administrative accountable. अगर इस किस्म की सेंसिटिविटी है, फॉर एग्जांपल मेंबर्स ज़्यादा हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हैं विच आर प्रमोटिंग CBNRM. नंबर 2, आपकी जो पॉलिसी डिबेट्स मीडिया पे हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. यू टेल मी पाकिस्तानी मीडिया हैज़ media channels are increasing day by day, radio channels are increasing. How many debates are being taken place in terms of talking about environment? Yes, politics is there, economics is there, लेकिन environment पे कोई ऐसी गुफ्तगू होती नहीं. I haven't seen, like there is National Geographic, there is Animal Planet, there are so many other channels, but those are international. पाकिस्तानी कोई environment पे अगर कोई channel बना हो, I doubt. ठीक है, so कितनी मीडिया पे ऐसी डिबेट्स आई, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई, हाउ मेनी मीडिया डिबेट्स वर टेकिंग प्लेस, लाइक जस्ट नाउ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, एवरी सेकंड चैनल इज हैविंग डिबेट्स ऑन इट, बट very few debates on climate change policy. So that shows that how much government is interested in the environmental issues. Then court cases आपको बहुत बता दें that how many court cases are there, and how local communities and how these local pressure groups are holding accountable the higher authorities कि जी इन्होंने ये काम नहीं किया. So such kind of things are a reflection that how much state is in getting involved, how much people are thinking about environment as an important component in terms of their sustainability. Now, summing up, ideally monitoring of community-based natural resource management would be a formidable and probably prohibitable expensive task, definitely. ठीक है ना, प्राइमरी कलेक्शन आप कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स के साथ कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आप उठा रहे हैं, so it is going to be an expensive process. Then it would be naive to assume that once initiated, CBNRM is a guarantee self-sustaining success, which needs no monitoring or adjustments. Again, that's a wrong notion. It needs constant monitoring, constant adjustment, constant feeding into different heads so that this CBNRM is mainstreamed. ठीक है, हम कहते हैं मेन स्ट्रीम ऑफ कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद आपकी जो है जितनी ज़्यादा मीडिया डिबेट्स होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी डिस्कशन होगी, दैट इंश्योर्स कि आपकी कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स सिस्टम इज़ गेटिंग इनटू प्ले. उसके बाद शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स माइट बी ओवर इंटरप्रेटेड कि जी पॉवर्टी ख़त्म होगी, गुड गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी, बट दे माइट बी ओवर आर्ग्यूड. दिस डजंट हैपन.
there might be some objectives, शायद poverty alleviation का objective worsen off हो जाए. We can't, poverty शायद further worsen off हो जाए if we apply a community based natural resource system. Natural resources बेहतर हो जाए, good governance शायद बेहतर हो जाए, but in the short run do not over exaggerate the results. Long run में आपको पता चलता है that how the results are going to be. So अपनी time horizons को do keep in mind. उसके बाद we can say that the countries who have actually applied this community-based natural resource system in the initial years, they were failures. But they should not dishearten us, because in the longer run, then the systems actually work, because we learn by mistakes. It should not be that your miracles are going to happen within a year. जो गंदा पानी है, that is going to get cleaned within a few time, but it will be taking time. So keep the time horizon factor in your mind, because it will take time, but it will always give some good results. Now it is not a standalone situation, and क्योंकि natural resource management नहीं हम कर रहे, we are achieving 3 more objectives. One is good governance, one is poverty alleviation, and it is a kind of a development strategy, ठीक है ना, and it gives you a better results. And it is a CBNRM is a development, is rather a development process and constant power struggle, because communities are constantly struggling with each other, and the objective is that they need to get into the better natural resource management, better relationship with nature, poverty reduction, and good governance. So this actually concludes our CBNRM, in which we are talking about that how these things work out from national level till the local level. So it is very crucial, and in the next lecture we are going to talk about the conflict and how conflict is going to take place and how we can mitigate conflict. Till then, I would suggest that again go through these slides and understand the models, understand the different concepts, because this is upcoming emerging concept in terms of natural resource planning and management, community-based natural resource management. Thank you very much and have a nice day.